Evening, better. Please go through the formulas fastly. We'll try to do some problems. Already I've sent it you in the group the notes. So please just go through them fast. Density का एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेंगे, हम पर भी एक बार डिराइव कर लेंगे, then we'll directly start numericals related to the expansion of liquids. And please inform your other friends also बेटा, शायद वो लोग मैसेज देखे या नहीं देखे. So एक बार अगर हुआ तो पर्सनली एक बार कॉल कर लेके बोल दीजिए जल्दी. I'll wait for another 5 minutes. Sir, I have not started the class yet. I'm just waiting for remaining student also to join. But also please inform your other students also so it will be better. I'm just scrolling the notes. You just go through it बोल के आपके पास रहा है तो. Density variation of density of liquid with temperature derivation करा हुआ देखिए एक बार देख लीजिए.
रनिंग बेटा। फंक्शन ऑफ लिक्विड्स में हम लोग ने एक टॉपिक मिस कर दिया था, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड विद टेम्परेचर। इसका फॉर्मूला देखो बेटा, हम लोग ने सॉलिड्स में भी किया था, वैसे भी फिर भी एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। डेंसिटी इज नथिंग बट इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू हाउ मच बेटा फॉर मी, मास बाय योर वॉल्यूम, ठीक है ना। डेंसिटी इज इक्वल्स टू योर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड भी बढ़ेगा। जैसे आप दूध गर्म करने रख रहे हो स्टोव पे, तो क्या वॉल्यूम इसका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो डेंसिटी का रिलेशन देखो, अगर वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसका मास तो रिमेन कांस्टेंट रहेगा ना बेटा। सो दैट इज द कंडीशन, मास टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज, सो डेंसिटी विल डिक्रीज बट मास रिमेन सेम। ये यहाँ पर ने सॉलिड्स में भी पढ़ा था। अब कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ योर रियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, गामा आर इज इक्वल्स टू V2 minus V1 divided by V1 into T2 minus T1, यानी डेल्टा V divided by original volume into change in temperature. Electric potential is there, नहीं बट electric potential नहीं है बेटा, because I have not taught you, I have removed it from the syllabus. Electric potential नहीं है, it is only solids liquids है बेटा basically, और thermometer के थोड़े बहुत questions, units and dimensions errors भी नहीं रखा मैंने एक बार because of the climatic conditions। एक बार मैंने एग्जाम सिर्फ सॉलिड्स और लिक्विड्स पे ही रखा हुआ है बेसिकली। नेक्स्ट वीक विल प्लान इट, मंडे से एज यूजुअली क्लासेस कंटिन्यू होंगे ना, जैसे जैसे सिलेबस होते जाएगा वैसा अपन एग्जाम रख लेते चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इंक्रीज होगा, तो डेंसिटी डिक्रीज होगा, मास विल रिमेन कांस्टेंट। और कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन क्या होता है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ योर रियल एक्सपेंशन इज गामा आर इज इक्वल्स टू V2 minus V1 डिवाइडेड बाय V1 into T2 minus T1। मान के चलो एट T1 डिग्री सेल्सियस, अगर T1 डिग्री सेल्सियस के पास रो नॉट, हम लोग ने डेंसिटी को रो नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज रिप्रेजेंटिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से T2 इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं डेंसिटी को रो T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट मींस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट योर T डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। नो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन कम्युलेटिव बेटा, दिस टाइम नो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ सॉलिड्स और लिक्विड्स पे ही होगा बेसिकली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन इज V2 minus V1 डिवाइडेड बाय V1 into T2 minus T1। T1 इज इक्वल 0 डिग्री सेल्सियस के पास मैंने डेंसिटी को रो नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसको मैं बोल रहा हूँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस। और T2 इज इक्वल टू मैंने T डिग्री सेल्सियस पे जा रहा हूँ, मे बी 0 से ज्यादा, मे बी 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री वॉट एट मे बी, उसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, रो T से रिप्रेजेंट किया, दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो अब देखो वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मास बाई डेंसिटी, isn't it? वॉल्यूम को कैसे लिख सकता हूँ, मास बाय डेंसिटी एट 8 डिग्री सेल्सियस। V1 को मास बाय डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, V1 इज मास बाय दिस वन T2 माइनस ऑफ T1। तो इसमें से एवरीवेयर मास गेट्स कैंसिल हो जाएगा, तो रो नॉट माइनस रो T डिवाइडेड बाय रो T इनटू T, बिकॉज T2 T है, T1 0 है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मैंने लिखा T1 0 है, T2 T है, तो T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, T माइनस 0, दैट इज नथिंग बट T। तो गामा आर विल बी इक्वल टू how much बेटा, गामा आर इज इक्वल टू रो नॉट माइनस रो T डिवाइडेड बाय रो 80 डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर, ठीक है। अब मैंने रो नॉट माइनस रो T को बाहर निकाला, तो रो T इंटू गामा आर इंटू T, गामा T को मैंने अंदर ले लिया, तो रो नॉट इज इक्वल टू रो T इंटू 1 प्लस गामा आर इंटू T, यानी डेंसिटी एट T डिग्री सेल्सियस कितना आ गया बेटा, डेंसिटी एट योर T डिग्री सेल्सियस इज कमिंग आउट फॉर मी, कितना आ रहा है देखो, डेंसिटी एट योर T डिग्री सेल्सियस कितना आ रहा देख लो। तो अगर मैं अंदर ले लिया तो दिस विल बी इक्वल टू रो T इज इक्वल टू रो नॉट इंटू योर 1 प्लस गामा आर इंटू योर T। वन मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सो ऑब्वियसली डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस के पास ग्रेटर देन रहेगा डेंसिटी T डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मैंने बोला जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी कम होते जाएगा, तो डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा रहेगा कंपेयर टू डेंसिटी एट योर T डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, दैट इज अ बेसिक फॉर्मूला। अब मान के चलो T1 डिग्री सेल्सियस मैंने रो नॉट को कैसे लिखा हुआ है, रो 1 इंटू 1 प्लस गामा आर इंटू T1। T2 की डिग्री सेल्सियस के पास रो नॉट इज इक्वल टू रो 2 इंटू 1 प्लस गामा इंटू T2, इक्वेटिंग 1 इंटू, क्योंकि रो नॉट है, दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूँ, तो इफ आई एम इक्वेटिंग बोथ ऑफ देम, तो रो नॉट इक्वेट कर लो, तो यहाँ पर देखो सिंप्लीफाई कर लो, तो ये रो 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, रो 1 इंटू 1 इज रो 1 इंटू गामा आर इंटू T1 इज इक्वल टू रो 2 इंटू 1 इज रो 2 प्लस रो 2 इंटू गामा आर इंटू T गामा। तो अब मैंने रो 1 और रो 2 को एक जगह ले लिया, सो रो 1 माइनस रो 2 इज इक्वल टू रो 2 इंटू गामा आर इंटू T2 माइनस रो 1 इंटू गामा आर इंटू T1,
ठीक है ना। तो इसमें से मैंने गामा को कॉमन ले लिया, रो2 इंटू T2 माइनस रो1 इंटू T1। तो कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू हाउ मच, रो1 माइनस रो2 डिवाइडेड बाय रो2 इंटू T2 माइनस रो1 इंटू T1। दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू बी रिमेंबर, ठीक है। चलो पूरे एक बार फॉर्मूले से रिवाइज कर लो जल्दी से। डेंसिटी कितना हो गया, रो नॉट और रो टी में दे रखा है, तो गामा आर इज इक्वल टू रो नॉट माइनस रो टी डिवाइडेड बाय रो टी इंटू टी डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। डेंसिटी टी डिग्री सेल्सियस इज रो नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा इंटू टी, और इन रो वन रो टू में दे रखा है, तो गामा आर इज इक्वल टू रो वन माइनस रो टू डिवाइडेड बाय रो टू इंटू टी टू माइनस ऑफ योर रो वन इंटू योर टी वन। Am I clear with this one? Look at this question. See this question. A sphere of diameter, a sphere of diameter 7.0 centimeter, ठीक है, and mass 266.5 grams, okay, floats in a bath of liquid, in a bath of liquid, ठीक है। As the temperature increases, as the temperature is raised, the sphere begins to sink at a temperature of 35 degrees Celsius, ठीक है। If the density of the liquid, the density of the liquid is 1.527 gram per centimeter cube at 0 degrees Celsius, okay. Find the coefficient of cubical expansion, cubical expansion of the liquid, cubical expansion of the liquid. Neglect the expansion of sphere, neglect the expansion of sphere, ठीक है। You are not able to hear me. Am I audible to everyone? Am I audible बेटा? अभी आ रही क्या? नहीं आ रही बोल रहे तो ऑडिबल नहीं हो रहा था। Someone is telling I'm not audible.
गुरुज एक बार चेक कर लो बेटा, प्लीज लेट मी नो वेदर यू आर एबल टू हियर मी और नॉट। मेरे पास तो आवाज जाने सर का तो आवाज आ रही है ये बात। ओके चलिए क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। स्पीयर ऑफ डायामीटर, मेरे पास एक स्पीयर है, मेरे पास एक स्पीयर है जिसका डायामीटर है, मेरे पास डायामीटर कितना है बेटा 7.0 सेंटीमीटर एंड इसका मास भी है 266.5 ग्राम एंड इज फ्लोटिंग इन ए बाथ, यानी एक बाथ के अंदर ये फ्लोट कर रहा है, एक बाथ के अंदर ये फ्लोट कर रहा है, ये वाटर है मान के चलिए, फ्लोट कर रहा है मतलब सम पार्ट इन द वाटर है सम पार्ट इसमें। तो स्पीयर बिगिंस टू सिंक इन टेम्परेचर, जैसे मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया टू 35 डिग्री सेल्सियस तो वो सिंक कर गया। इफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 1.527 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब at 0 degree Celsius, find the coefficient of cubical. ये कब फ्लोट करेगा बेटा? If the density of the liquid is equal to the density of sphere, so then it will start floating. Isn't it? Expansion of sphere से negligible बोला। Density of liquid at 0 degree Celsius कितना दे रखा है? Density at 0 degree Celsius is given as 1.527 gram per cc. Isn't it? So the body will float. The body will float. The body will float if the weight of the body is equals to weight of the buoyancy. यानी लिक्विड के बारे में, यानी डेंसिटी ऑफ योर लिक्विड जो रहेगी ना वो डेंसिटी ऑफ स्पीयर के बराबर होना चाहिए तो ही फ्लोट करेगा कोई भी बॉडी। ये अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में आ गई कंडीशन, बस याद रख लीजिए ठीक है। डेंसिटी एट सम टेम्परेचर मतलब 35 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू, that will be equal to how much में बेटा? इसका डेंसिटी कितना दे रखा है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम ना, सो इट इज 266.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज 4/3 5 into r क्यूब, यानी डायमीटर विल भी दे रखा है, so diameter is 2 times of radius, r is equals to d by 2 कर दो, that is 7.0 divided by 2, यानी ये हो जाएगा 3.5, तो ये हो गया 3.5 का होल क्यूब। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना, ठीक है ना? हमें क्लियर? तो डेंसिटी एट 35 डिग्री सेल्सियस एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा इनटू टेंपरेचर डिफरेंस 35 माइनस ऑफ योर 0। सो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ योर बॉडी, इन दोनों की इक्वेट कर लीजिए, यानी दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी बेटा? देख लो कितना आ रहा, 266.5 डिवाइडेड बाय 4/3 into 3.14 into 3.5 whole cube will be equal to density at 0 degree Celsius ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ अगर रिमूव बेटर। इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो 1 प्लस गामा 35 माइनस 0 इज 35 इंटू 35 इज इक्वल्स टू डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना? इसको कैलकुलेट करो बेटा, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ रफली आई एम गेटिंग दिस वैल्यू एज 1.484 ग्राम पर सीसी, ठीक है ना? सो दैट विल बी इक्वल टू योर डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है अपने को 1.527 डिवाइडेड बाय 1.484, so this value is approximately 1.029. I'm using the calculator beta, so ये हो गया 1 plus 35 times of your gamma is equals to 1.029, यानी गामा की वैल्यू कितनी होगी approximately? तो 35 times of gamma is equals to this much, यानी 35 times of gamma is equals to 1.029 minus 1, यानी this value will be equal to 0.029, यानी gamma will be equal to 0.029 divided by 35, so that will be approximately 8.28 into 10 power minus 4 per degree Celsius, ठीक है? हमें क्लियर? एक बार देख लीजिए बेटा कंडीशन, बॉडी जब भी फ्लोट होगी ये मानने को याद रहना चाहिए, व्हेन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द स्फीयर या डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ये अपने को दिमाग में याद रहना बेटा, ठीक है? Density of your liquid must be equal to density of the sphere, then only the body will float, otherwise the body will not. तो मैंने पहले डेंसिटी ऑफ बॉडी निकाला, कितना है मेरे को 1.484 एंड डेंसिटी ऑफ द 35 डिग्री सेल्सियस के पास वो नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा, लिक्विड के लिए फॉर्मूला है ना मेरे पास, ये डेंसिटी ऑफ द बॉडी, दोनों की इक्वेट कर लिया, सिंपलीफाई कर लो, विल गेट द आंसर। मैं क्लियर हूं जिस वन? हमें क्लियर? हमें क्लियर बेटा?
One very good question. In a vertical U-tube, containing a liquid, ये वैसे भी YouTube पे लाइव जा रहा है बेटा. The two arms are maintained. The two arms are maintained at different temperatures. This is a good model बेटा. तो थोड़ा ध्यान से देना. At two different temperatures. That is T1 and T2. ठीक है? The liquid columns जो है ना, the liquid columns in the two arms, have heights L1 and L2. L1 and L2 respectively. The coefficient of volume expansion of the liquid is equal to. ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए इसका अच्छी तरह से. इन ए वर्टिकल U-tube containing a liquid. ठीक है ना, तो मेरे पास एक U-tube है इस तरह से. और इसमें पानी भरा हुआ है अप टू सर्टेन हाइट. तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है यहाँ तक इस तरह से बेसिकली. और इसके अंदर यहाँ तक. ठीक है, इसका लेंथ है मेरे पास L1 एक U-tube के अंदर, और इसका लेंथ है मेरे पास L2. ठीक है, और ये है टेम्परेचर T1 और ये है टेम्परेचर ऑफ T2. अब क्वेश्चन देखो. In a vertical U-tube containing a liquid, the two arms are maintained at different temperatures T1 and T2. The liquid columns in the two arms are, यानी T1 के पास L1 है और T2 के पास L2 है. The coefficient of volume expansion of the liquid is your how much? ठीक है ना. So both of them are open to the atmosphere ना बेटा. So I can write here first one, atmospheric pressure of the first tube place density. अपने को pressure का फॉर्मूला मालूम है. Pressure is equal to H rho into G. So I can write here height of the liquid column as of your height मतलब first one ले रहा हूँ मैं right now. This will be equal to your L1 into density rho1 into your G is equals to, this one will be P0 plus this is L2 density at your 2 into G. वैसे भी G gets cancelled. P0 or P0 will be also getting cancelled. So this will be your density at your T degrees Celsius I can write here. And length at your L1 is equals to density at T2 मतलब कितना हो जाएगा बेटा, ये T1 टेम्परेचर के पास, ये T2 टेम्परेचर के पास, इसका लेंथ हो गया L2. ठीक है, am I clear with this one? Density at T1 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना हो जाएगा बेटा, रो नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा इनटू T1, isn't it, into your L1 is equals to, this will be equal to rho naught divided by 1 plus gamma into temperature T2 into this will be length L2. ठीक है ना, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो रो नॉट और रो नॉट कैंसिल दिखाई दे रहा है मेरे को, isn't it? So if I cross multiply and write this one, this value will become how much for me beta, 1 plus gamma into your T2 into your L1 is equals to 1 plus gamma into T1 into your L2. ठीक है ना, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. 1 into L1 is right now for me L1 plus this one is L1 gamma into T2 is equals to, this one is L2 plus this is L2 gamma into your T1. अपने को निकालना क्या था, गामा. तो मैं पूरे गामा टर्म्स को एक जगह ले लूं बेटा. So I can write this one as right now. So this value if I am taking right now, L2 के घर इधर ला लिया तो this is L1 minus L2 हो जाएगा. So this value will become for me L1 minus of L2. ये वाले टर्म को उधर लेके जा रहा हूँ मैं बेसिकली. तो गामा कॉमन हो जाएगा. This will be equal to your L2 into T1 minus L1 into your T2. अगर तो गामा की वैल्यू हो गई मेरे पास L1 minus L2 divided by this will be L2 into T1 minus L1 into T2. So this will be the value of gamma. थोड़ा सा कैलकुलेशन का ही पार्ट है, रिमेनिंग इज सिंपल.
ठीक है ना, थोड़ा फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पर मुझे सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ रहा है, अगर नहीं मालूम है तो एक बार आप याद रख लीजिए। ये मेथड हम लोग बाद में जब स्टैटिक्स वगैरह होगा ना, तो जब यू विल गेट एन आइडिया इन यूट्यूब व्हेनेवर इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करेगा पी नॉट, और यहाँ पर भी प्रेशर ऐड करेगा पी नॉट, और जितना ये हाइट होगा इस पे यहाँ पर प्रेशर होगा P इज इक्वल्स टू H रो इंटू जी। H1 है, रो 1 है, ये H2 होगा, रो 2 होगा इंटू जी, और यहाँ पर प्रेशर जो होगा P इज इक्वल्स टू यहाँ पर होगा बिकॉज ऑफ योर हाइट दैट इज नथिंग बट H1 रो 1 इंटू जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड कर रहा है तो P नॉट प्लस ये प्रेशर को ऐड करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो रो एट योर T1 विल बी इंटू L1 इज इक्वल्स टू रो इंटू T2 इंटू योर L2। डेंसिटी का मुझे फॉर्मुला मालूम है, वो डाला, सिंप्लीफाई कर लिया, सो वी आर गेटिंग दिस फॉर्मुला फॉर दिस। Am I clear with this one? आया सभी को? गुड क्वेश्चन है बेटा। डाउट इसके अंदर एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। नहीं बेटा, टू डिफरेंट है ना बेटा, तो टू डिफरेंट के टेम्परेचर्स में प्रेशर एट द पाइप 1 विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पाइप 2, प्रेशर एट योर पॉइंट 1 विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट 2। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं डेंसिटी के ऊपर ही। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, the density of a substance, the density of the substance at 0 degrees Celsius is 10 gram per cc or cubic centimeter cube. Okay, and at 100 degrees Celsius, its density is 100 degrees Celsius के पास its density is 9.7 gram per centimeter cube या cc बोल दीजिए। The question is the coefficient of linear expansion, so expansion of solids का है बेटा, linear expansion of substance is, चलो ट्राई करिए एक बार से भी लो, डायरेक्ट डेंसिटी बेस्ड फॉर्मूला है। Density at 0 degrees Celsius is equals to density at T degrees Celsius into 1 plus of your gamma into delta T, gamma into T. Coefficient of this में पूछ रहा है तो D naught will be equal to TT into 1 plus gamma is 3 times of your alpha into your T. ठीक है ना, डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना है बेटा 10, डेंसिटी एट 10 डिग्री सेल्सियस इज 9.7 into 1 plus 3 times of your alpha into temperature is 100। ठीक है ना, so this value will become for me 10 divided by 9.7 is equals to 1 plus 3 alpha into your 100। ठीक है ना, so it is here 300 into alpha लिख सकता हूँ। ठीक है ना, so I need the value of alpha, यानी ये वाली कितनी बन जाएगी बेटा 10 divided by 9.7 minus 1 is equals to 300 times of your alpha। यानी इसका अगर मैं एलसीएम ले रहा हूं तो दिस विल बी 10 माइनस 9.7 डिवाइडेड बाय 9.7 इनटू ये हो गया यहाँ पर 1/300 इज इक्वल्स टू अल्फा। 10 माइनस 9.7 इज हाउ मच फॉर मी बेटा 0.3।
divided by 9.7 into 300 is equals to your alpha. 9.7 मतलब 97 divided by 10, ठीक है ना? So this will be equal to how much for बेटा? देख लीजिए कितना आ रहा है approximately 0.3 मतलब कितना हो जाएगा 0.3 divided by 97 divided by 10 into your 300. तो ये 0 चले जाए, so that will be equal to your alpha, and that will be equal to your 0.3 मतलब 3 by 10 हो जाएगा, so 3 by 10 into 3 into 970, isn't it? So that is equals to alpha. बराबर 0.3 मतलब 3 by 10. So 3 get cancel here right now for me. It will be 1 by 97. ठीक है? So alpha is equals to 1 by 97 into 10 power 2. Am I clear? So this lecture is for IC boys or inter students. This is for NEET students. ये already NEET का question है. I hope you got it. Sayyid Raina Ali. ठीक है, इसका कैलकुलेशन देख लीजिए. ये ऑलरेडी और नीट में पूछा गया वो मॉडल है बेटा. That's the level basically you need to do it out. Done? So this value will be approximately कितना रहा 0.0001 per degree Celsius. That will be the answer. Done? हो गया बेटा? चलिए ये आप लोग कर लीजिए एक बार जल्दी से. The real coefficient of volume expansion, the real coefficient of volume expansion of glycerin is 0.000597 per degree Celsius. Okay, and linear coefficient of expansion of glass. Expansion of the glass is 0.1, 2, 3, 4, 5 times of 0, 9 per degree Celsius. Then apparent volume coefficient of glycerin is, ये भी ऑलरेडी पूछा गया मॉडल है बेटा. एक बार ट्राई कर लीजिए क्या क्या दे रखा है इसके अंदर. बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन. द रियल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द ग्लास दे रखा है, यानी गामा ऑफ योर ग्लिसरीन is given how much for mu 0.0. Coefficient of real coefficient gamma r is equals to of your glycerin is equals to 0.000597. The linear coefficient of expansion of glass, yani alpha of glass is 0.123459 per degree Celsius. The apparent expansion gamma apparent पूछ रहा है. We know the formula gamma real is equals to gamma apparent plus gamma of your glass, and a gamma apparent will be gamma real minus gamma of your glass. ठीक है ना. gamma of glass कैसे लिख सकता हूँ मैं बेटा? gamma apparent is equals to gamma real minus 3 times of alpha of glass. Gamma real is given for me 0.000597 minus this is 3 times of alpha of glass 0.12345 into 9. ठीक है ना. देख लो कितना आ रहा है बेसिकली. This one is 0.000597 minus this value will be equal to how much approximately देख लीजिए एक बार जल्दी से.
This one is 3 into 0.1234 into 9. कितना आ रहा बेटा? 3 9 से 27 बस 0.1234 into 27. ठीक है ना? तो इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए. See how much I'm getting approximately. This will be 0.00597 minus 0.00027. We'll be getting approximately 5.7 into 10 power minus 4. यानी this value will be equal to your 0.123 point के बाद आ गया ना into your 57 5.7, isn't it, per degree Celsius. Very good. डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, एक बार देख लीजिए. हमें क्लियर? और एक क्वेश्चन कर लीजिए जल्दी से. A second pendulum gives correct time at 25 degrees Celsius. That the pendulum shaft is thin and is made of steel. ठीक है? How many seconds will it lose per day? ठीक है? At 35 degrees Celsius. Alpha of steel is equals to 11 into 10 power minus 5 per degree Celsius. चलो try करो जल्दी से. I hope you remember this formula everyone. Loss or gain का time क्या है बेटा? How many seconds will it lose? Loss per day is equals to half into alpha into temperature difference into 86,400 seconds. That means that will be equal to half into alpha की वैल्यू कितनी है? 11 into 10 power minus 5 into temperature difference कितना है? 35 से 25 तक into 86,400 seconds. See how much I'm getting right now. This one approximately. देख लीजिए कितना. कितना आ रहा है बेटा? आपको एक कैन इज 0.5. 0.5 मतलब 5 by 10. This will be 5 into 11 into 10 power minus 6 into यहाँ पर 0 ले ला रहा हूँ into 10 power 2. 35 minus 25 is nothing but 10 into 8 6 into 4, isn't it? So this will be equal to 5 11s are 55 into 10 power minus 6 into 10 power 3 into 864. 810 यहाँ पर आ गया. That will give me the answer. See how much I'm getting right now approximately. So it is 55 into 864 into 10 power minus 6 plus 3 कितना होता है बेटा? Anyone? Minus 3. Very good. So now 55 into 864 कितना है? So that is approximately 47520 into 10 power minus 3. मतलब approximately I can take 3 zeros, 1 2 3 की जगह डाल दो. So this will be 4.75 seconds.
Done. ये कैसे कर सकता हूँ? This will be 4752 into 10 power. This will become for me -2. And this will be 47.5 seconds. ठीक है? कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं कर ली, देख लो एक बार. ठीक है? Yes. ठीक है बेटा. चलिए. Next question देखो. This is a good question. A flask of volume 10 power 3 cc is completely filled with mercury at 0 degrees Celsius. The coefficient of cubical expansion of mercury is 180 into 10 power minus 6 per degree Celsius, and that of glass is 40 into 10 power minus 6 per degree Celsius. ठीक है? A flask is now placed in boiling water at 100 degrees Celsius. तो क्या हो जाएगा? Expand होगा, isn't it? So question is, how much mercury will overflow? How much of mercury will overflow? A flask of volume 10 power 3 cubic centimeter is completely filled with mercury. ठीक है ना?
Did anyone get this answer? Flask of volume at 10 power 3 cubic centimeters completely filled with mercury at 0 degrees Celsius. The coefficient of cubical expansion of mercury there that of the glass is also given. If the flask is now opened, has been now placed in boiling water at 100 degrees Celsius, how much mercury will overflow? ठीक है? Increase in volume पहले देखो, जैसे when you are increasing it, increase in volume is how much? Increase in volume of flask. Isn't it? So that will be equal to your delta V निकालना है ना बेटा. So original volume, isn't it? Into gamma into delta T. Isn't it? Coefficient of cubical expansion of mercury and that of the glass is being given for me. Increase in volume बोले तो delta V is equals to your V into gamma into delta T. And this will be equal to V gamma मतलब 3 times of your alpha. Coefficient of cubical दे रखा ना directly यानी V into delta T. So it is V into gamma into delta T. Original volume कितना है 10 power 3 into gamma की वैल्यू कितनी है 40 into 10 power minus 6 into temperature difference कितना है 0 से लेके 100 degree Celsius kept in the boiling path, so 100 degree Celsius. तो ये कितना आ रहा देख लीजिए 10 power 3 4 5 यानी 5 6 10 power 6 यानी 4 आ जाएगा ये कितना ही ना बेटा 10 power 3 into 4 into 10 into 10 power minus 6 into 100 and this will be 10 power 3 this is 4 5 6 10 power 6 into 10 power minus 6 into 4 ये वाला चले गया so that will be equal to 4 cc. So increase in volume of the flask will be 4 cc. So increase in volume of mercury कितना होगा बेटा increase in volume of mercury increase in volume of mercury will be equal to again V into gamma of mercury into temperature difference. So original volume is 10 power 3 into gamma of mercury is given how much for me beta? देखो problem में कितना दे रखा 180 into 10 power minus 6. So it is 180 into 10 power minus 6 into temperature is difference is again 100. So that will be equal to 10 power 3 into 18 into 10 into 10 power minus 6 into your 100. So 3 4 5 6 ये वाला चले गया तो this will be equal to 18 cc. So volume of the mercury जो overflow हो रहा है that will be equal to so increase in volume of vessel isn't it यानी V into gamma of mercury into delta T minus V into gamma of your glass into delta T. So that will be 18 cc. ये कितना हो जाएगा यहाँ पर this is 18 cc minus 4 cc that will be equal to 14 cc. This will be the answer. ठीक है ना मैं क्लियर ठीक है बेटा चलिए one last question good question बेटा a 1 liter flask 1 liter flask contains certain quantity of mercury ठीक है if the volume of air inside the flask remains the same ये मैंने कराया था concept at all temperatures underline the word at all temperatures then the volume of mercury in the flask is in the bracket
volume expansion of coefficient. Volume expansion coefficient of mercury is 20 times that of flask. Okay, this is a question. I'll give the options for this one. First one is 0.5 cc. Next one is 5 cc. Third one is 50 cc. And fourth one is 500 cc. What I go? Good question. I told you the concept related to this one. At all temperatures, when it is at your same, what is the formula? I told you this one. यहाँ पर देखो इसका concept कहाँ गया? ये वाला. ये वाला. Fraction of the liquid taken in a vessel, thus that the volume of the empty space remains constant at all temperatures. Volume of liquid divided by volume of glass is equals to gamma of glass divided by gamma of liquid. यहाँ पर liquid क्या है? Mercury. ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्ट. ठीक है. All right, here volume of mercury divided by volume of glass is equals to gamma of your mercury. So, you know, gamma of your mercury inversely proportional है ना बेटा. Gamma of mercury divided by gamma of volume of your glass will be equal to gamma of your vessel or gamma of your glass divided by gamma of your mercury. ठीक है ना. तो volume of mercury कितना है? That is volume of your glass multiplied with gamma of your flask. यहाँ पर glass क्या है? Flask है. Divided by gamma of mercury. So volume of flask. यहाँ पर glass मतलब क्या है? Glass or flask को ले लीजिए. That value is given how much for me? 1000. 1 liter बोला है ना बेटा. Volume of glass or your flask will be equal to 1 liter. 1 liter is equals to 1000 cubic centimeter into gamma of your flask is equals to how much for me? The problem देखो volume coefficient of gamma of your mercury is equals to 2 times of gamma of your flask बोला है. So I can write here gamma of flask is equals to gamma of mercury divided by 20. And this will be equal to gamma of mercury divided by 20 into gamma of mercury. Gamma of mercury will get cancelled. This 0 will get cancelled. So it is 100 divided by 2. So 100 divided by means 2 ones are 2 5 का यानी ये हो गया 50 cc. Very good. Am I clear? चलिए और एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा. This one is also a good question. A vessel is half filled with a liquid, half filled with a liquid at 0 degrees Celsius. When the vessel is heated to 100 degrees Celsius, the liquid occupies 3/4 volume of the vessel. ठीक है. Coefficient of apparent expansion. Coefficient of apparent expansion of the liquid is. चलो बताइए. Coefficient of apparent expansion का फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को?
coefficient of apparent expansion is equals to change in volume divided by original volume into temperature difference. Same formula, V2 minus V1 divided by V1 into temperature difference, T2 minus T1. यानी that is equals to V2 कितना दे रखा है बेटा 3/4 times of V minus V1 is how much for me V/2 divided by V/2 into temperature difference कितना है 100, isn't it? तो यहाँ पर 3/4 minus ये हो गया 1/2 into V divided by V/2 into your 100. तो V और V gets cancel यहाँ पर, isn't it? So this is how much for me बेटा 4 minus of your 1/2 divided by 2. तो कितना आ जा रहा है? So this will come out for me. LCM will be 2, 4 minus 3, that will be equal to 2, 2. So 2/8 आ जाएगा. 2/8 divided by 1/2 into 100. ठीक है ना? It is 2 1s are 2 50s. So that is equals to 2 divided by 8 into 50. ठीक है ना? This is 2 1s are 2 4s are 8. So that will be equal to 5 4s are 20, and this will be equal to 1/200. So 1/200 is nothing but 1/2, that is 0.5 into 10 power minus 2. Yani that is 0.005 per degree Celsius. That will be the answer. Okay? Machine फर्किंग क्या हुआ समझ में नहीं आया? देखो the vessel is half filled with the liquid. मेरे पास एक vessel है. This is half filled with the water. यानी total vessel अगर V है तो जितना filled है मेरे पास V/2 है. कितने टेम्परेचर के पास 0 डिग्री सेल्सियस के पास. When the vessel is heated to 100 डिग्री सेल्सियस, जब इसको मैंने 100 डिग्री सेल्सियस लिया, the liquid occupies 3/4 of the volume. यानी अब ये बढ़ गया ऐसा. At what temperature? ये हो गया कितना 3/4 of your original volume. At what temperature? 100 डिग्री सेल्सियस. तो मैंने ये हो गया V2 और ये हो गया V1. This is your V1. Done? फिट आउट इसके अंदर. हमें क्लियर? चलिए सर एक्सप्लेन दिस वंस मोर. क्या हुआ देखो बेटा, मैं डायरेक्टली पूछ रहा प्रॉब्लम है क्या. देखो a vessel is half filled with a liquid. ये देखो केस नंबर 1 है. a vessel है half filled with the water. टोटल वेसल का वॉल्यूम कितना है V है और उसमें फिल किया हुआ है V/2. at what temperature 0. when the vessel is heated to 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने इसी वेसल को 100 डिग्री सेल्सियस को हीट किया तो वॉल्यूम में भी बढ़ गया उसके अंदर का पानी. कितना हुआ 3/4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी V2 है. Isn't it? The coefficient of apparent expansion पूछ रहा है. Coefficient of apparent expansion का फॉर्मूला गामा apparent is equals to change in volume divided by delta T. तो उसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं? V2 minus V1 divided by V1 into T2 minus T1 से लिख रहे हैं. This is your gamma apparent का फॉर्मूला. तो V1 की वैल्यू कितनी है बेटा? V1 is equals to V2 है और V2 is equals to 3/4 times of V है. तो यहाँ पर V2 की जगह 3/4, V1 की जगह V/2, V1 is V/2, टेम्परेचर डिफरेंस इज 100. So this में से वॉल्यूम कैंसिल हो गया तो 3/4 minus 1/2 divided by 100/2. सिंप्लीफाई कर लीजिए, that will give me the answer. Am I clear? नसरुल्लाह. चलो वेरी गुड. नाउ वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोलना है, जल्दी से करके बताइए. छोटा सा क्वेश्चन है. When formula based, when 82 gram of liquid, when 82 gram of liquid at 10 degrees Celsius in a specific gravity bottle, isn't it, is heated to 85 degrees Celsius, comma 2 gram of liquid
2 gram of liquid is expelled. 2 gram of liquid is expelled. So stop. Coefficient of apparent expansion. Coefficient of apparent expansion of liquid is a direct formula है specific gravity का मैंने बताया था आप लोगों को. Coefficient of apparent expansion is equals to expelled divided by remaining into temperature difference. याद आया? कितना expelled है बेटा? How much is expelled? 2 gram of liquid is expelled. That is 2 divided by remaining कितना होगा बेटा? What is the remaining amount right now? 82 में से 2 grams expelled हो गया. So remaining is 82 minus 2 into temperature difference. Temperature difference कितना है बेटा? Final is 85, initial is 10. तो ये हो गया मेरे पास 2 divided by 82 minus 2 is 80 into 85 minus 10 is nothing but 75. ठीक है ना? So this will be giving me how much you see right now roughly. It is 2 ones are 2 fours are यानी 1 by 40 into 1 by 75. ठीक है? So this is how much for me? 1 by 40 into 1 by 75 is coming for me 1 by 3000. So that means this will be equal to 1 by 3 into 10 power minus 3. So that will be 1 by 3 value is 0.333 into 10 power minus 3. So that means if I remove even this minus 3, this will be 0. This will be approximately 1, 2, 3. This one is 333 per degree Celsius. This will be the answer. Done. One divided by 3 is 0.3 only. Then रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला याद है ना सभी को? छोटा सा नोट लिख लीजिए, then we keep the first of the class. If scale मैंने क्लास में करवा दिया है, फिर भी एक बार आप लोग रिवीजन के लिए देता हूँ. डायरेक्ट फॉर्मूला. If a scale gives correct reading, at temperature theta naught, comma, at temperature theta, scale will expand or contract. ठीक है? And hence scale reading जो रहेगी, scale reading will be lesser or greater, cold country or hot country, than true value, than your true value. तो true value निकालने का तरीका, true value is equals to scale के ऊपर जो reading रहे ना वो वाली ले लेना है, scale reading multiplied with 1 plus alpha into theta minus theta naught कर लो, डायरेक्ट एक शॉर्टकट फॉर्मूला बन जाएगा. True reading or true value is equals to scale reading multiplied with 1 plus gamma into higher temperature minus of your lower temperature. That will give me the answer. ठीक है? True value is equals to scale reading into 1 plus alpha into theta minus of your alpha into theta minus theta. ठीक है ना? ये पॉइंट देख लीजिए उसी तरह से. मेरे पास एक कॉपर स्ट्रिप है. This is made up of copper and this one is made up of iron. Isn't it? See, alpha of copper जो है ना greater than alpha of iron होता है. तो ये बेंडिंग में कैसा बन जाएगा बेटा? ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे क्या आएगा? कोई बता सकता है? ऊपर will be copper
और नीचे will be your iron, ऐसा कुछ shape बने, isn't it? So strip with higher value of gamma will be on convex side, beta, isn't it? You can write here strip with higher value of alpha will be on convex side, will be on convex side. यानी ये वाला जो है, this one is your convex side and this will be your concave side. Done? एक छोटा सा पॉइंट याद रख लीजिए आप. सर स्केल रीडिंग प्लस आर माइनस वो एरर होगा बेटा, ठीक है ना? Am I clear? एक एग्जांपल देता हूँ देखो आप लोग, एक क्वेश्चन कर लो फॉर्मूला बेस पे. मान के चलो the brass scale of a barometer gives correct reading at 0 degrees Celsius. Coefficient of linear expansion of brass is 2.0 into 10 power minus 5 per degree Celsius. ठीक है? The barometer reads 75 centimeter at 27 degrees Celsius. Question is, what is the atmospheric pressure? Or I can say, what is the true reading? What is the true reading? Yeah. What is the given condition? The brass scale दे रखा है, true value is equal. Scale reading कितनी है यहाँ पर बताओ जल्दी से. Scale reading. The brass scale of a barometer gives the correct reading at 0 degrees Celsius. Coefficient of linear expansion of brass is given. Alpha of brass is given for me 2 into 10 power minus 5. The brass reads 27 degrees Celsius. What is its true reading? So scale reading is equals to how much for me? 75 centimeters. Temperature difference theta minus theta naught is 27 minus 0. That will be equal to 27 degrees Celsius. So true value will be equal to how much for me? True value is equals to scale reading is 75 into 1 plus this one is right now for me how much? Alpha की value कितना दे रखा है? देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? अल्फा की वैल्यू दे रखा है 2 into 10 power minus 5 into temperature difference is 27. So simplify that one, that will give me the answer. We will be getting approximately this one as 75.04 centimeter. Check with the calculation. That okay. So थोड़ा रिवाइज कर लिए, कल के एग्जाम के लिए सिर्फ सॉलिड्स और लिक्विड्स ही है. So at least try to do a 25 to 30 questions on this topic. Okay, चलो टेक केयर बेटा, बाय. आपको नोट्स भेज दूंगा मैं.